So students, today we are going to start with the second lecture of the second chapter of the NCERT book, class 9th, that is matter around us pure? Okay. Uh, yes, students, here we will see the pure and impure substances from the vision of the chemistry, okay, from the vision of the science, right? Uh, in language of science, anything which is washed in the water of the river Ganga, right, is not pure. What is pure? If it contains only one type of molecule. Okay, if any substance consists of only one type of molecules, then we will say it is a pure substance. And if it is containing the molecules more than of one type, okay, then we will say it is impure substance. That may be mixed, that is mixture, that may be solution, homogeneous or heterogeneous. We will see it in detail. That may be colloidal solution, that may be true solution. All right, so let's go through it. How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? Right, in general language में हमारा क्या है? We go to the shop and we say pure ghee दे दीजिए. Chemically pure ghee is not possible. Pure milk दे दीजिए, not possible. Right, so that is consisting of milk में आपका milk एक colloidal solution है, that is having water, that is having lactose sugar, that is having other proteins, minerals, etc etc. Right, so technically ये चीजें pure नहीं है. जो कॉमन लैंग्वेज में प्योर का नोटेशन है वो है कि इसमें किसी भी तरीके का मिक्सिंग नहीं है. ओके, बट केमिस्ट्री के लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंसेस का मायने अलग है. एनीथिंग विच इज हैविंग जस्ट वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस. If more than one type of molecules are present, then we'll consider the substance to be impure, or impure substances are called mixtures. What is a mixture? Mixture, as I told you, made up of more than one type of substances, more than one type of particles. So pure substance का definition, स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बोला, जब भी आप वीडियो लेक्चर ले रहे हैं या फिर ऑडियो लेक्चर ले रहे हैं तो आपके पास एनसीईआरटी बुक्स, पेन और एक रफ नोटबुक होना चाहिए. कीप हाईलाइटिंग द थिंग. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. ओके, फॉर एग्जांपल आपके जो एलिमेंट्स हैं, all elements, you must have seen in your periodic table from hydrogen to anan, octium 1 to 118, all are considered pure substances. And compounds are also pure substances. Okay, we'll study them in detail, but first we are taking mixtures in detail. Okay, which are, because most of the things around us are mixtures, and mixtures are made up of more than one type of particles, that is more than one type of molecules, or we can say more than one type of pure substances are mixed together to form mixtures. All right, mixtures are constituted by more than one kind of pure substance, pure form of matter known as substance. The substance cannot be separated into other kind of matter by any physical process. Okay, we know that dissolved sodium chloride can be separated from water by heating. Okay, बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. जब आप हीट करोगे तो वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और आपके कंटेनर में सोडियम क्लोराइड रखा रह जाएगा. हाउएवर सोडियम क्लोराइड itself is a substance which cannot be separated by a physical process into its chemical constituents, right? Similarly, sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is same throughout. So sugar आपका pure है, NaCl pure है, because आप NaCl में से Na और Cl सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से. ठीक है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? एनीबडी कैन टेल मी? यस, इट इज C12H22O11.
the sugar which you are having in your kitchens. Okay, this is called sucrose. So just by any physical method of separation, we cannot separate the carbon atoms, hydrogen atoms, and the oxygen atoms. Okay, right? Soft drink and soil are not single substances. Whatever the source of a substance may be, right, it will always have the same characteristic properties. Therefore, we can say that a mixture contains more than one substance. All right, let's see the mixtures, type of mixtures. Okay, मैं एक बार आपको बेटा जनरल क्लासिफिकेशन दिखा दूं, फिर हम इस चैप्टर में आगे जाएंगे. सी, हमारे फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने मैटर का ही क्लासिफिकेशन पढ़ा है और सेकेंड चैप्टर में भी हम मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं. बट व्हाट हैपेंड in the first chapter? We have seen the physical classification of matter, right? Physical classification, how the matter was divided into solid, liquid, gas. We also have seen two more states, that is Bose-Einstein, condensate, and plasma. All right, and we have gone through the properties of all these interconversion, processes of interconversion, temperatures of interconversion. These all things were discussed in the first chapter. Sorry. In the second chapter, beta, we have to study about the chemical classification of matter. Chemical classification, right? And in the chemical classification, we have seen the substance can be divided, all the matter in the universe can be divided into two types, pure and impure. Impure means mixture. Okay, so what are pure substances? Pure substances were further categorized into two types: elements and compounds. As I have told you, pure substances are made up of, consist of only one type of particles, that is one type of molecules. Elements and compounds. Okay, what is the difference between element and compound? This is also a very necessary part and which you must note and you should understand. Element, beta, the molecules of element are made up of only one type of atoms, right? For example, H2, so both hydrogen atoms are present there. O2, both oxygen atoms are present there. Cl2, both chlorine atoms are present there, right? So molecules of element are made up of only one type of atoms also. But in case of compound, you will see that different atoms are combining to form compound. For example, water, H, O and H, right? Understanding what I'm saying? In the very similar way, we are having what? NaCl, sodium chloride, okay, and we are having HCl, hydrogen chloride, one atom of hydrogen and one atom of chlorine, etc. Fine. अब कुछ लोगों को लग सकता है कि सर यहाँ पर भी तो मिक्सिंग हो रही है, हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला दिया है, तो ये मिक्सचर हो जाना चाहिए, ये प्योर सब्सटेंस हो जाना चाहिए. नो, अगर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक कंटेनर के अंदर रखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मान लीजिए दोनों रखे हुए हैं, राइट, तो हम इन दोनों को, ये कंपाउंड नहीं है, ओके, ये दोनों मॉलिक्यूल्स है, तब हम इसे मिक्सचर बोलेंगे. फॉर एग्जांपल हमारी एयर में ऑक्सीजन भी है, O2, नाइट्रोजन भी है, N2, राइट, बट हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर नहीं बोल सकते. नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बॉन्डेड केमिकली, ओके, उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके एक स्टेबल बॉन्ड फर्निश कर रखा हुआ है, जबकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं. आ रही है बात समझ में? जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो वहां पर रेशियो फिक्स है. फॉर एग्जांपल H2O में बेटा आपको एटॉमिक मास के साथ मैंने
मास नंबर भी एक चीज पढ़ाऊंगा। हर एटम का एक पर्टिकुलर मास होता है और उसके अकॉर्डिंग हमने हाइड्रोजन का मास 1 AMU मान रखा है और ऑक्सीजन का 16 AMU, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो वाटर में हाइड्रोजन 1 × 2 दैट इज 2 है और ऑक्सीजन 16 है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो अगर आप निकालोगे तो 1:8 आएगा, राइट। एंड दिस रेशियो इज फिक्स्ड। आप कहीं पर भी वाटर ले लीजिए, किसी भी प्लेस का वाटर ले लीजिए, दैट मे बी वाटर ऑफ योर laboratory, that may be water of your tap, that may be rain water, that may be water present on moon, okay। आ रहा है बात समझ में? Water from any place will have the same composition of the hydrogen and oxygen, that is in the ratio of 1:8, all right। This is compound। compound में जो elements हैं, जो particular different type के atoms अलग अलग हो सकते हैं, but वो chemically bonded है। दूसरी चीज, उनको हम किसी भी physical process से separate नहीं कर सकते हैं। Third thing, they are present in a fixed mass, fixed ratio of their masses, okay। While mixture में आप 1 लीटर वाटर में 1 ml ऑक्सीजन डिजोल्व करिए, वो भी मिक्सचर है, राइट। और डिफरेंट कॉम्पोजिशंस आर पॉसिबल। आ रही है बात समझ में? वहां पर कुछ फिक्स नहीं है ऐसा रेशियो ऑफ मास, अंडरस्टैंडिंग? This is the difference between the, so this was the discussion about the pure substances, element and compound. Let me tell you something in detail about the mixtures, that is impure substances. Beta, mixtures are divided into 3 categories. True solutions, I must correct myself. Mixtures are of 2 categories: true solutions and wait a minute. Let me make it more easy for you. Let's have a classification: homogeneous mixtures, and heterogeneous mixtures. All right. So first of all, let me tell you what are homogeneous mixtures. The mixtures in which throughout composition of the component, suppose the mixture is having 2 components, A and B, right? A plus B are present. Okay. So throughout the mixture, the distribution of A and B must be uniform. Okay. सपोज इस कंटेनर में आपका ए एंड बी है, तो आप इस जगह से सैंपल ले लें या फिर सैंपल इस पॉइंट से ले लें या इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से। इन ईच एंड एवरी केस यू मस्ट गेट सेम कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी, गॉट इट? इन दैट केस यू विल से इट इज होमोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, आप शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, राइट? सो दैट इज इक्वली स्वीट when you are taking the first sip and equally sweet when you are taking the last sip, okay? Why? क्योंकि वहां पर शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन टॉप से लेकर के बॉटम तक यूनिफॉर्म है। इट मींस इट इज होमोजेनस, राइट? ऑन द अदर हैंड वी कैन हैव अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, वाटर एंड चॉक पाउडर, ऑलराइट? वहां पर क्या हो रहा है? टॉप पर कम सैंड पार्टिकल्स हैं और बॉटम में सैंड पार्टिकल्स ज्यादा हैं। आ रही है बात समझ में? ऐसा होता है, ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? ऑल राइट। सो व्हेन यू आर हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन एट डिफरेंट प्लेसेस विद इन द मिक्सचर, देन इट इज कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द रिएक्शन, थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट इज होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर्स आर फर्दर named as solutions. These homogeneous mixtures are also called solutions, right? Solutions. And heterogeneous mixtures are called what? Are further divided into 2 categories. Heterogeneous को हम और 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं,
colloidal solution and suspension. Okay, colloidal solution and suspension. Fine, students. So in this chapter, we will study about all these things in great detail. Okay. So I think we should stop it here. And this is our first introductory lecture of this chapter. Further, we'll see the things in detail. So students are requested to go through the chapter once before taking the videos for much better understanding and for much better familiarity during the lecture. All right. Thank you, class. Keep learning, keep watching, and stay connected, stay healthy. Thank you.